हेलो स्टूडेंट, आई एम कविता साळुंखे। वेलकम टू माय चैनल कविता साळुंखे इजी मैथ्स। और आज हम सीखने जा रहे हैं फिफ्थ स्टैंडर्ड सीबीएसई फिफ्थ स्टैंडर्ड फ्रॉम एनसीईआरटी बुक हाउ बिग हाउ हेवी लेसन। ओके, और इस लेसन में आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड दिया गया है। एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड इज फॉर 6th, 7th and 8th standards. Okay, so these students also, if you will watch this video, it is useful for you also. Okay students, so we will start. Okay, because कमेंट बॉक्स में मुझे 5th स्टैंडर्ड का वीडियो डालो ये कहा गया था, so I made this video. So please we will start now. See students, volume, okay, for 5th standard, okay, volume is new actually. Before that, see, आपने area and perimeter तो सीखा है, okay, everyone knows what is mean by see. Now if you have to find, okay, area of rectangle, so what is this? This is length of rectangle and this is breadth. Okay, same, if you learn area of cube also. Okay, all sides are same of this square. Okay, so what is the area of this square? Area of square, what you are writing? Side square. Okay, and this area of rectangle you are writing L into B, means length into breadth. Now this, always remember students, this your square and rectangle are 2D shapes. Okay, they are having length and breadth. Okay, here also see length and breadth having, here also all sides have. But when you see, all you know, maybe many students are playing with that Rubik's. Okay, वो क्यूब जो होता है, या फिर आप जब लूडो खेलते हो उसका जो डायस होता है, वहां पे भी उसका शेप भी क्या होता है, स्क्वायर के जैसे होता है। लेकिन क्या होता है, see that square having height also. Okay, means that squares, see, आपका जो डायस होता है वो कैसे होता है, see in this shape it is. ओके, इस शेप में होता है, उसको क्या बोलते हैं, क्यूब। दिस शेप वी आर सेइंग क्यूब। ओके, तो क्यूब को क्या होता है आपके, सी, इसको भी समझो, हम ये स्क्वायर देखें, इसका बेस या इसका टॉप अगर हम देखें, ओके, ऑल साइड्स, ऑल 6 साइड, सी हियर, उसमें भी क्या होता है, ऑल साइड्स आर सेम। ओके, यस, नो, मे बी ऑल यू आर प्लेइंग विद दैट लूडो, ओके, विद दिस डाइस। नाउ आपको पता है उसके सभी साइड्स सेम होते हैं, लेकिन उसमें से ये स्क्वायर और इन दिस क्यूब, व्हाट इज द डिफरेंस हियर, ओनली 4 साइड्स आर देयर, बट हियर सी दिस हाइट आल्सो देयर. Yes, no, whatever dice we are playing, to that dice we are having height also, same like this shape, okay, rectangle shape. But if I will make like this shape, see your compass box, okay, your geometry box we are saying, okay, see the geometry box having this shape, and this shape we are saying the cuboid. It is like a rectangle only, but it having height also. Okay, so this cube and this cuboid we are saying 3D shapes. Now 3D shape, now how we finding this area of square and rectangle, same we are finding volume. Okay, volume of cube and cuboid. Let's move towards our volume of cube and cuboid. First understand this shape, cube and cuboid. These both are the 3D shapes. Now we are going to learn the volume of cube and cuboid in this lesson. अभी ये जो आपके सामने क्यूब है, ओके, सो क्यूब का समझो हमने ये है उसका ये एक साइड, ओके, ये समझो नीचे का, ये ऊपर का, आप किसी भी साइड से देखोगे 6 साइड्स आर देयर, उन सबके क्या होते हैं, ये जो आपको पता है, ओके, एजेस जो होते हैं वो सभी क्या होते हैं, सेम होते हैं। एंड सी दिस क्यूबॉइड, क्यूब हैविंग हाइट आल्सो. Now area of cube, what we are writing, whenever they are having 4 sides, okay, so what we are saying to it, L side square, okay, but volume of cube is what? Now see, volume of cube we are writing, volume of cube is side cube. Okay, now side cube, see students, maybe a side square. Now while finding the area of square you are writing side square. It means what? Side multiplies side, you are, okay, you are doing, it means what? Side 2 times you are multiplying. Now the meaning of side cube, now this cube is new for you 5th standard. Okay, so what is the meaning of this cube? See, cube means this side we have to multiply 3 times. So see here,
volume of cube we can write like as it like this also, side into side into side. Okay, in your textbook also they give us side into side into side, huh? Or but mostly we are using volume of cube is equal to L cube because length of all three sides. So length of one side, all sides are same. So L cube means side into side into side. This L means length, okay, of one side. So all sides are equal in cube. So how we will multiply this? L into L into L means length into length into length. Of that 3 times we have to multiply. Why? Because cube is there. Now see, we will see the examples means you will understand. We will write this formula, okay? V is equal to L cube or side cube you can write. Just see, we will see the example, then you will understand. Now see, one side of cube, okay, side of cube is, if I will write 5 centimeter, okay, 5 centimeter. So find the volume of cube. Find the volume of cube. If question will be like that, so how you will find? Just see. Now volume of cube, we got this formula. Volume of cube is what? V is equal to L cube means length cube. Okay, that all side cube. You can write side cube also. Now what they give us side? 5 centimeter. So 5 on the place of L we are writing 5 cube. Now I told you what is the meaning of this cube. Cube means what? We have to multiply that downside number 3 times. So 5 multiply 5 multiply 5. 3 times you have to write. Now just multiply, what we will get? Volume is equal to 5 5s are 25. 25 5s are 125. Okay, for that you should know the tables also. So 125. But what? Now while writing area we are writing centimeter square. Okay, while writing perimeter we are writing centimeter. But when we are finding the volume, we have to write cubic centimeter because it is in centimeter. If it is in meter, then we can write cubic meter. Understand students how we have to do? Whenever they are giving side of cube, we have to find the volume. Then how we will find the volume? The volume of cube is what? L cube. Okay, so L cube means what? Whatever side they given that. 5 cube means 5 we have to multiply 3 times. 5 into 5 into 5. So we will get 5 5s are 25. 25 5s are 125. क्यूबिक सेंटीमीटर. ये यूनिट लिखना भी जरूरी है. ओके, जैसे आप एरिया या पेरीमीटर फाइंड करते वक्त लिखते हो वैसे. अगर एक मीटर का एग्जांपल लेती हूँ, समझो साइड इज इक्वल टू 2 मीटर. Okay, then find the volume. How we will find the volume? Then we have to find if the volume. So same formula, volume is equal to L cube. So L is what now? 2 cube. It means what? 2 into 2 into 2. So what we will get? See here, 2 2s are 4. 4 2s are 8. मतलब आपको 3 बार इसी नंबर को मल्टीप्लाई करना है. तो यू विल गेट वॉल्यूम इज इक्वल टू 8. और अभी यूनिट क्या आएगा आपका? क्यूबिक. और मीटर दिया है तो मीटर. CU लिखना है आपको. ओके, क्यूबिक मतलब CU. जैसे आप एरिया फाइंड करते हो SQ लिखते हो. ओके, स्क्वायर सेंटीमीटर. या फिर आप क्या करते हो? सेंटीमीटर उसके ऊपर 2 लिखते हो मतलब स्क्वायर. ओके, सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर स्क्वायर सेंटीमीटर. वैसे ही यहाँ पे क्या करना होगा आपको? क्यूबिक सेंटीमीटर या फिर क्यूबिक मीटर. अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स हाउ टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब. नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स हाउ टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड. ओके, now see, this is cuboid. Okay, now how you will find the volume of cuboid? Just see. Okay, whenever you are finding the volume of cuboid, see here it is like a rectangle only what is different here, having the height. Okay, if you are saying this is length, okay, this one is breadth, okay, and this one is height. See this. Okay, this one is what? Height. Means how our formula, how we will write? See, the volume of cuboid is equal to length into breadth into height. Okay, so in shortcut how we will write this? V is equal to L into B into H. Always no need to write this length into breadth into height like that. Okay, you have to write L means length, B as a breadth and H as a height. Okay, so see one example we will take, then you will understand. Now see, if okay students, see, we will see one example now. If the length of cuboid is
length of cuboid is 10 meter. Okay, breadth is 5 meter and height, if height we will say 2 meter. Okay, then find volume. How we will find? See, find volume. How you will find? Same, by this formula you have to find. Okay, volume of cuboid is what? Volume of cuboid is L into B into H. Now they given L means what? Length. They given length. Length is what? See, the length of cuboid is 10 meter. Okay, for अगर सी जब भी कोई एग्जाम्पल ऐसे होता है, ओके, आप जो गिवन होता है उन्होंने क्या दिया है वो भी आप लिख सकते हो, मतलब वो आपको इजी जाएगा. उन्होंने क्या दिया है? सी द लेंथ ऑफ क्यूबॉइड. लेंथ क्या दिया है? 10 मीटर. ब्रेड क्या दिया है? 5 मीटर. एंड हाइट दे गिवन 2 मीटर. ओके, एंड वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम. ऐसे लिखोगे तो आपको इजी जाएगा. ओके, सो सी हियर length is what? 10. So you will write here 10 multiply breadth is 5 into 2. Now see here how you will multiply. Always remember student, whenever आपको जब भी आपको इसे 3 नंबर मल्टीप्लाई करने होते हैं तो देखिए कि कौन सा नंबर आपको इजी जाता है मल्टीप्लिकेशन करने में. ओके, तो आप कौन सा नंबर लोगे? सी हियर, यहाँ पे 10 इंटू 5 50 होगा. 50 टू 100 वो थोड़ा डिफिकल्ट होगा आपके लिए. तो देखो 5 टू 10 होगा. ओके, और 10 का टेबल तो आपको आता ही है. सी 2 5 10, 10 10 100 मीन्स यू विल गेट 100 cubic meter. Same like a cube, you have to write this cubic meter here. Understand students how to find the volume of cuboid? Same we will write. अगर see second example I am taking again. Length is equal to, if we will take see 8 centimeter. Okay, breadth is equal to, if we will take 4 centimeter, and height if we will take 2 centimeter. So we have to find the volume. So how we will find? Volume is equal to length into breadth into height. Same, we have to multiply all these three. So 8 into 4 into 2. Now यहाँ पे देखो, अगर आप 8 4 जा 32 करोगे तो आपको 32 का टेबल तो आता नहीं है. तो आपको क्या करना पड़ेगा? सी 2 4 जा 8. ओके, और 8 8 जा 64. यू विल गेट 64 क्यूबिक. यहाँ पे सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर. Understand students how to find the volume of cube and cuboid? This point is very important, and finding volume of cube and cuboid, it is useful for means up to 10th standard it is useful only. Okay, it is basic. Okay, 5th standard is the basic of all standards. So see, just please see this how to find the volume. Okay, वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड कैसे फाइंड करते हैं? वॉल्यूम ऑफ क्यूब जब हम करते हैं तब क्या करना पड़ता है हमको? साइड क्यूब. इसका मतलब जो भी साइड दी होती है, क्योंकि क्यूब ऑल साइड आर सेम, सो एक साइड वो देंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? वही साइड 3 बार आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. And when they are giving the cuboid, okay, all cuboids length, breadth and height they are giving. From that you have to find the volume of cuboid. So how you will find? First you have to multiply all that length, breadth and height. Okay, so you will get whatever answer is there, that we have our volume. And while writing you have to write cubic meter or cubic centimeter. Okay student, whatever unit they given that you have to write. Now see, understand student how to find the volume of cube and cuboid. So if you like this video, so please like, share and subscribe my channel. Means you will get like that more important videos. और अगर आपको कोई भी लेसन डिफिकल्ट लगता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो. ओके, आई विल मेक दैट वीडियो फॉर यू. ओके, 5th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स ने मुझे बोला था कि आप मैम 5th स्टैंडर्ड का वीडियो डालो. सो आई मेड दिस वीडियो. ओके, आपको कैसा लगा वीडियो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए स्टूडेंट. ओके, बाय एंड प्लीज वॉच माय ऑल वीडियोज. इट इज वेरी यूजफुल. पहले मैंने पेरीमीटर एंड एरिया ऑल्सो आई गिवन. सो इन दैट यू विल गेट हाउ टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ सर्कल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. ओके, सो प्लीज वॉच दैट वीडियो ऑल्सो. ओके स्टूडेंट्स, बाय.